we are going to start with actual journal entry question from this video. So before you start this video, I request you, if you have not seen, please see the previous video and get those things mastered. Means how to find out types of account. Second video is about the golden rule of accounts, how to find debit and credit. Third video is all about how we actually do debit credit in a sum. ये तीनों वीडियो आपने देखे और चौथा एक वीडियो है अबाउट द व्हाट आई शुड से द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री. ये चारों वीडियो आपने देख लिए, आपके दिमाग में पूरी तरह सेट है. इफ यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल थ्री रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों के अगर डेबिट क्रेडिट रूल आपको याद है तो ही इसको शुरू कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी. सो आई ट्रस्ट दैट यू हैड सीन ऑल दैट, यू हैड बाय हार्टेड द होल personal, real, nominal rule, and then we are starting with this. So let's go ahead with the question. So I am ready with the format. और क्वेश्चन मैंने यहीं पे, ये वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं है. वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, बट अपने थोड़ा सा आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, कॉपीड हियर. ओके, सो नाउ इट स्टार्ट विद मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बट पहले आ जाएगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स. हेडिंग आ गया. देन डेट हम कैसे लिखते हैं? डेट वी ऑलवेज राइट ईयर ओनली वन टाइम, 2020. ईयर इज ओनली रिटन वन टाइम. देन मार्च 1. ओके, now the first answer is मनोहर लाल started business with cash. so हमको जो डेबिट क्रेडिट वाले सब में सीखा था वही करना है, बट फर्क क्या है यहाँ पे दिमाग में सोच. कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट आएगा कैश. नाउ वी नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. सो बिजनेस पॉइंट ऑफ सोचता हूं तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी डेबिट. And Manohar Lal is giving to the business, so Manohar Lal will be credit. I applied the rule of real and personal. Cash is real account, तो real का rule apply किया, और Manohar Lal is personal, तो personal का rule मैंने apply किया है. So now let's write down the entry. So हमने जो clear किया उसके अंदर क्या हुआ? Cash account डेबिट आया और मनोहर लाल कैपिटल अकाउंट क्या आया? क्रेडिट. तो ये जब यहाँ पे लिखूंगा, so now the rule is जो भी डेबिट होगा वो अकाउंट मुझे पहले लिखना पड़ेगा. So now I write cash account debit to Manohar Lal capital account. Cash to Manohar Lal capital account हो गया. LF column always dash. Then amount is how much? Amount is 60,000. So debit I write 60,000, credit I write 60,000, and here it is I write narration being goods purchased. Sorry, being goods purchased. I made it wrong. It is being business started. Narration is a short summary of the transaction. फॉर्मेट क्या है उसके बारे में भी अलग से वीडियो, फॉर्मेट की एक एक पार्ट मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है. सो कहीं पे भी कंफ्यूजन है, गो टू दैट फॉर्मेट वीडियो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश. अगेन फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट टू अकाउंट, तो आई राइट मार्च डेट कौन सी है? मार्च 2. मार्च 2 लिखूंगा. मार्च 2 के अंदर मैं लिखूंगा क्या है यहाँ पे? परचेज फर्नीचर फॉर कैश. सो अगेन व्हाट आर द टू अकाउंट्स? एक है फर्नीचर अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट. फर्नीचर रियल कम्स इन डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट. क्लियर है? सो फर्नीचर विल बी डेबिट, कैश विल बी क्रेडिट. सो वी नोट इट डाउन हियर इन अ प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे. अब वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, रूल्स, डेबिट, वो कुछ भी नहीं दिखाना है, सीधा प्रेजेंटेशन ऐसे करना है. सो आई राइट फर्नीचर कम्स इन, सो आई राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट ये कैश ठीक से नहीं, उसको ठीक कर देते हैं.
It is here. Sorry. To cash account. Fine. कितना amount है? Amount is 10,000. So I write 10,000 and 10,000. And narration is being furniture, something about the transaction. Clear? Simple. Next transaction. March 4, purchase goods for cash 25,000. तो फर्स्ट में डेट लिख दूं March 4. Purchase goods for cash. दो अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट. अब यहां पे ये चीज समझ लेना, when we purchase goods we use the word purchase. गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, उसका नाम. सपोज आई बॉट फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. सो आई राइट बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, वो सब लिखते हैं. बट व्हेन आई परचेज गुड्स आई राइट परचेज अकाउंट. सो यहाँ पे गुड्स परचेज किया तो अकाउंट कौन सा आएगा, परचेज अकाउंट. सेकंड विल बी कैश अकाउंट. परचेज रियल कम्स इन डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट. सो पहले ये दिमाग में मैंने सोच लिया. And now I go here, it comes up here. So my entry will be purchase account debit to cash account. Amount कितना है, 25,000. So 25,000 debit, 25,000 credit. The narration is something about the transaction being goods purchased. Simple है, straightforward है. If you remember the rules well, it is like a cakewalk for you. Bought goods from Kamlesh. Now important. Bought goods from Kamlesh. Important thing to be understood. When in a question name is given. इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या था, bought goods for cash. यहां बोला bought goods from Kamlesh. When name is given, we assume it is on credit. मतलब पैसा नहीं दिया है. And when money is not given, we remember the name instead of cash. क्लियर है. तो परचेज गुड्स फॉर कमलेश में एक अकाउंट तो परचेज आएगा, वो तो क्लियर है. दूसरा कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, कमलेश अकाउंट. सो व्हेन इन अ क्वेश्चन नेम इज गिवन instead of cash we remember the name assuming that the transaction is on credit. तो परचेज अकाउंट आया, कैश अकाउंट आया. परचेज रियल कम्स इन डेबिट, कैश कैश नहीं इसमें कमलेश. पर्सनल अकाउंट, कमलेश रिसीविंग और गिविंग, he is giving, तो कमलेश अकाउंट will be credit. Fine. So I come up here and I write it is March 5. It is purchase account debit to, it will be Kamlesh account. Clear? When name is given, we write the name. Amount कितना है, 15,000. So it is 15,000. 15,000 being goods purchased. Simple है, straightforward है. Get it clear? Great. Next is paid cash to Kamlesh. Again two account, cash account, Kamlesh account. Pay किया है cash real goes out credit. Kamlesh personal, Kamlesh is a receiver, so debit. And always you write the debit first. Fine. So it is March 10. Kamlesh is a personal account, Kamlesh is receiver, so it will be debit. So I'll write Kamlesh account, but it is credit, so I need to make it debit. Kamlesh account, it will get debit to what we paid. We paid cash to him,
So it is to cash account. So it is 15,000 is paid, 15,000 debit, 15,000 credit. And what I'll write narration? Narration is being cash paid to Kamlesh. Simple. Something about the transaction जो मैंने एंट्री किया उसके बारे में मुझे लिखना है. It always starts with being. Good till here. So let's move ahead to the next transaction. Purchase goods from Sohan for purchase goods from Sohan 6,000. So this first मैं लिख दूं March 16. So एक तो मैं बहुत क्लियर हूं इसमें परचेज अकाउंट आएगा. नेक्स्ट कैश आएगा कि सोहन अकाउंट आएगा? बोलो बोलो, कैश की सोहन? Yes, you got it right. It's a Sohan. When name is given, we remember name. When cash is given, we write cash. यहाँ पे name दिया तो we'll write name of the Sohan. So again, purchase. अब देखो, अब तक भले याद कर लो, purchase always real. Purchase में always क्या होने वाला है? कम से नहीं होने वाला है. So I'll write purchase account debit to Sohan account. कितना है अमाउंट? 6,000. It is being goods purchased. Fair? Okay. So when name is given, we write name. When cash is given, we write cash. Let's move further. Important. Purchase goods from Sohan for cash. So now name is also given, cash is also given. Purchase goods from Sohan for cash. When name and cash both are given, we take cash. तो सीधा साधा एक दुनिया का नियम याद रखने का, जब पैसा नहीं मिलता है ना तो हम नाम याद रखते हैं, पैसा दिया हुआ है हम नाम याद नहीं रखते हैं. So now there are three options. When nothing is given, we assume cash. When cash is given, we write cash. When name is given, we write name. Clear है? So when cash is not given, we write name. When cash is given, we write cash. Clear है? So our entry will be, again purchase है तो purchase will always be debit. So it is March 18. March 18, purchase account debit to cash account. Why cash account? Because again purchase goods from Sohan for cash है. Name और cash दोनों दिया हो, we assume it as a cash. And amount is 8,000. So I wrote 8,000 being goods purchased. With me? Great. Paid rent for the office 1,000. So first I write March 20 rent paid. तो दो अकाउंट, एक आएगा रेंट अकाउंट, दूसरा आएगा कैश अकाउंट. रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. पेड है तो रेंट इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो डेबिट. कैश रियल, गोज आउट, पे किया है तो कैश गोज आउट, तो इट्स अ क्रेडिट. सो माय एंट्री विल बी रेंट अकाउंट. बहुत गर्मी है इसलिए सबको पीछे क्या लगाना पड़ता है? एसी लगाना पड़ता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर है? अमाउंट कितनी है? 1,000. सो इट कम्स टू 1,000. It comes to 1,000. And narration I write being rent paid. Fine. So we are done with the question number 1, but then at the end we need to do the total. Initially एक दो समय करूंगा, फिर I will not be doing the total. So totaling करने के लिए I need to write like this. And then let me, मतलब ये पूरी कॉलम का मुझे टोटल करना है. It is from 23 जहां से मेरा सम शुरू हुआ
from 23 to end, and my both side total should match. It will always match. Last में मुझे total करके end करना है. Fine. So to end with the first question, हमने journal entry समझी, but इसमें दो important rule हमने समझे हैं. When goods is given, we use the word purchase. When anything else is purchased, we write its name, like furniture. That's a rule one we understood. Second rule हमने जो समझा, when question name is given, we write name. When cash is given, we write cash. But if name and cash both are given, we write cash. Fine. I hope you are clear with the question. Let's move on to the next question.